Assalamualaikum. Darul Amal School System Class 2 Lecture number 1. Here I am your science teacher and today we are going to discuss about the chapter number 1, that is the human body. What is the chapter is? The human body. Human body means insani jism. Human body means insani jism. Very good. Now we will discuss what are the things that made the human body. So the human body is made up of 4 things. How many things? 4 things. How many things? 4 things. These 4 things are: number 1, skeleton; number 2, muscles; number 3, joints; and number 4, organs. What are these 4 things? Number 1, skeleton; number 2, muscles; number 3, joints; and number 4 is organs. Now we will discuss about the point number 1, that is skeleton. What is the skeleton and what are the functions of skeleton? So the bones made are skeleton. Skeleton is made up of bones. How many bones are there? 206. So the skeleton is made up of 206 bones. And the functions of the skeleton is, the very important function is, it gives shape. ये क्या देता है? Shape. And it also helps us to walk, stand, sit and run. It helps us to walk, stand, sit and run. तो skeleton किससे मिलकर बना है? हड्डियों से. कितनी हड्डियों से? 206 हड्डियां आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? स्केलेटन. और स्केलेटन का काम क्या है? हमें शेप देना. और इसके अलावा क्या काम है? चलने में, खड़े होने में, बैठने में, भागने दौड़ने में और इसके अलावा हर तरह का काम करने में हमें हेल्प करना. अगला हमारा पॉइंट है, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मसल्स. व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट इज? मसल्स. द फ्लैशी पार्ट अटैच टू द बोन्स. नाउ टच योर आर्म. अपनी बाजू को टच करें. एंड द फ्लैशी पार्ट, जो गोश्त वाला हिस्सा आपको महसूस होगा, उसको क्या कहेंगे? मसल. द फ्लैशी पार्ट अटैच टू द बोन इज कॉल्ड मसल. द फ्लैशी पार्ट अटैच टू द बोन इज कॉल्ड मसल्स. what are the muscles? So what are the muscles? The fleshy part attached to the bone is muscle. So what are the functions of the muscles? Muscles helps us to move. Muscles helps us to move. What is the function of muscles? To help in movement. To help in movement. And the next point is joints. अगला point कौन सा है? Joints. The point where the bones meet. Where the bones meet. That point is called joint. Now we have an activity about the joints. Touch your arm and try to move. Firstly, bend your arm. The point where your arm bent is called joint. That is your elbow. At the elbow point, your bones of your arms meet and they make a joint. They make a joint. So the point where the bones meet is called joint. Now move your hand. अपने हाथ को मूव करें और आपका हाथ जब बेंड होता है तो वो पॉइंट जहाँ से वो बेंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट. दिस इज द पॉइंट वेयर द बोन्स मीट. ये वो जगह है जहाँ पर ज्वाइंट्स जो है, बोन्स जो हैं वो मिलती हैं और क्या बनाती हैं? ज्वाइंट्स. वेरी गुड. नाउ टेल मी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड ज्वाइंट्स? They have the same function. They help in movement. What is the function of joint and muscles? Helps in movement. Now our next point is organ. There are the 2 types of organ: internal organ and sense organ, and we will discuss about these organs in our next lecture. And now your homework is to read this chapter thoroughly. Thank you. Allah Hafiz.